Now, interstate river water dispute is when it comes to India's federal structure, when it comes to cooperative federalism, when it comes to competitive federalism, एक जो core issue which is affecting all of it is this interstate river water dispute. जैसे आप देखेंगे, हम चाहते हैं कि states should be able to cooperate with each other to take India ahead, to take India to work together for India's socio-economic development. But अब सतलज यमुना लिंक वाले इशू पे हरियाणा एंड पंजाब आर फाइटिंग, और कावेरी वाटर इशू पे कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज फाइटिंग, which hampers India's cooperative federalism. तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में one of the biggest bone of contention is what? It is the interstate river water dispute, and this would be visible from these news articles also. जैसे अभी अगस्त में न्यूज था कि Kaveri water sharing issue is flaring up again. There is this month has seen scarcity of rainfall. Now, when there is scarcity of rainfall, there is less rain available in the Kaveri river. And what Karnataka starts doing, Karnataka does not release enough water for Tamil Nadu. So Tamil Nadu again goes to court, and the tensions emerge. This is something that is happening in August, and that is why this interstate river water dispute wala overall scenario we have to discuss. Similarly, if you go to July 2023, यहाँ पे भी there is this Pennayar river. Pennayar river is again something which is flowing between Karnataka and Tamil Nadu. In 2008, Tamil Nadu had moved to the court against Karnataka's work on check dams and diversion structure on this particular river. इस पे eventually it was decided that an interstate river water dispute tribunal would be created. But अभी क्या हुआ है? They had approached Supreme Court. The Tamil Nadu had approached Supreme Court on this river, and Supreme Court ने एक bench बनाया था इस river के issue को सुनने के लिए. But both the judges of the bench, Justice Bopanna and Justice Sundaresh, Bopanna was from Karnataka, Sundaresh was from Tamil Nadu. What happened? They recused from the case. So अब एक नया bench बनाना पड़ेगा. But the point is, last month also we had in news ये interstate river water dispute वाला topic. और if we further go to थोड़ा सा पहले, महानदी river issue पे छत्तीसगढ़ and Orissa were having some conflict. तो महानदी का एक interstate river water dispute tribunal बना हुआ है, which is studying कि how much water should Chhattisgarh get, how much water should Odisha get. So when this study is going on, what Odisha has claimed कि अप्रैल में कभी भी महानदी में इतना पानी नहीं आता. What Chhattisgarh has done is it has released more water this time to misguide the tribunal. They are getting so much of water in April. Right? Are we understanding this? तो ये भी न्यूज में था. अभी इन तीनों न्यूज को हम और डिटेल में समझेंगे after we study how the interstate river water dispute is managed in India. What are the laws? What are the constitutional provisions? What changes are needed there? उसके बाद हम इसको समझेंगे, because when you look at the questions which have been asked, questions are generally not about specific dispute. Questions are not about कि बताओ महादाई river वाले issue में क्या. Generally, it's not about that. Generally, the questions are about the overall problems which are there, why they are there, what are some of the limitations in the institutional framework, what are some of the limitations in the structure of the institutions which have been created. सवाल उस पे रहते. So if you look at the questions, एक मेंस 2013 में क्वेश्चन आया था, constitutional mechanism to resolve interstate water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? तो जो अपने पास रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं दो स्टेट्स के बीच में, उसको सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है, द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो मैकेनिज्म है, दैट हैज फेल्ड. So the question is, was that failure on the structural ground or on the because of process inadequacy, or was it because of both of them? So we have to understand what is the mechanism by which interstate river water dispute is resolved right now, and then what are the structural challenges, what are the process specific challenges there. So this kind of question may get asked again. Similarly, if you go to mains 2010, there was a question, disputes between riparian states on sharing of river water in post-independence era India are becoming increasingly complex. Objectively analyze the major disputes in this connection with special reference to southern states. So here they're talking about analyze the disputes, major disputes which are there
in the interstate river water dispute वाला issue. यहाँ पे भी आपको way forward में what do you have to give? You'll have to give a mechanism by which these disputes would be resolved. Then इससे भी पहले, if you go to 1986, there was another question: riparian rights are a source of dispute. How are they resolved in federal system? Interstate river water dispute कैसे resolve होता है? तो पहले जब आप 1980s 90s के क्वेश्चन में जाओगे ना, questions used to be much more simple. Now questions are way more analytical. They just do not ask how the disputes are resolved, but we'll understand how the disputes are resolved also. और कुछ और questions जो हमने बनाए हैं वो ये discuss the key challenges and gaps in institutional and political fabric of interstate river water governance within the Indian federal system, and then setting up a permanent tribunal to adjudicate river water dispute among states is a positive step forward. Critically evaluate this statement, and finally discuss the key factors behind origin of river water disputes in India. Why in recent years the river water disputes are becoming more and more difficult to resolve. So if you write all these answers, each and everything that may get asked from river water dispute wala situation would be properly taken care of. We have included PYQs here. We have included some other practice questions as well. So let's understand what is the mechanism. तो एक चीज तो हमें समझ में आई, इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज इन इंडियाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म is how do we resolve interstate river water dispute. और हमारे स्टेट्स के बीच में जो सबसे टेंशन वाली सिचुएशंस होती हैं उसमें से एक फैक्टर होता है क्या? रिवर वाटर डिस्प्यूट. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग अबाउट रिजॉल्विंग दिस रिवर वाटर डिस्प्यूट? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर शुड बी देयर इन योर टिप्स कि as per Article 262 of the Constitution. Article 262 of the Constitution is not directly providing for कि अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो ऐसे रिजॉल्व होगा. What Article 262 is saying is Parliament is empowered. What Article 262 is saying is Parliament may by law, Parliament by passing a law can provide for adjudication of any interstate river water dispute. तो Article 262 बोल रहा है कि Parliament may by law provide for. तो पार्लियामेंट ने क्या किया है? इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर एक लॉ बनाया है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड लॉ. इफ यू कम हियर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जिसके अंदर ट्रिब्यूनल वाला मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है. तो आर्टिकल 262 ने क्या बोला? आर्टिकल 262 ने बोला कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर मैकेनिज्म फॉर, और पार्लियामेंट में बाय लॉ विल प्रोवाइड for adjudication of interstate river water dispute. Adjudication ऐसे हो जाएगा. कैसे होगा? ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा. एंड इट इज ऑल्सो सेइंग दैट जुडिशरी विल नॉट एक्सरसाइज एनी ज्यूरिसडिक्शन. तो द लॉ में ऑल्सो प्रोवाइड, पार्लियामेंट जो लॉ पास कर रहा है उस लॉ में पार्लियामेंट ये भी बोल सकता है. सुनो जी क्या है? अच्छा, थैंक यू. Thank you very much, Sonu ji. Coming back to आर्टिकल 262 में पार्लियामेंट को इस बात से भी एम्पावर किया जा रहा है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ लॉ यू मे डिसाइड टू एक्सक्लूड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशरी. जो आप इंटरस्टेट रिवर वाटर, देखो इंटरस्टेट इश्यू होता है तो जनरली इट इज रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पे बोला है आर्टिकल 262 में कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है. हाउ विल इट बी रिजॉल्व? पार्लियामेंट में बाय लॉ विल डिसाइड दैट. And when Parliament is deciding it, it may also exclude, it may also provide that judiciary will not exercise any jurisdiction in respect of any such dispute. तो Parliament अपना जो law pass करेगा उसमें बोल सकता है कि भाई judiciary के पास final decision will be of the tribunal. judiciary के पास matter जाने की जरूरत नहीं. This is what Article 262 of the Constitution says. उसमें दो सब क्लॉज है. एक बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. दूसरा प्रोविजन बोलता है कि दैट लॉ में आल्सो प्रोवाइड फॉर एक्सक्लूडिंग जुडिशरी फ्रॉम एडजुडिकेशन फ्रॉम एनी स्टेट. तो इसी तो अदर देन दिस देयर आर in schedule 7 where we divide subjects between the union list and the state list, concurrent list. वहां पे under union list entry 57 says that union government will have power to
रेगुलेट एंड डेवलप इंटरस्टेट रिवर वैली। तो इंटरस्टेट रिवर वैलीज के डेवलपमेंट वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। वेयर एज इफ यू कम टू एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट, it deals with water, that is water supply, irrigation, canal, drainage, embankments, water storage and water. तो states को क्या responsibility दी गई है? States को इन areas की responsibility दी गई है। Now हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? Because when we'll talk about the limitations in the provisions, we will see that because of these provisions ambiguity आता है। ambiguity कैसे आता है? हमने ये बोला interstate river valley, the entry 56 of the union list gives power to the union government for the regulation and development of interstate river valleys. तो interstate river valley का regulation, पानी interstate rivers में कैसे यूज होगा, उसका डेवलपमेंट, उसकी जिम्मेदारी कहाँ दी गई है? स्टेट सेंटर को दी गई है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट लिस्ट में ये बोला जा रहा है कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, एवरीथिंग इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब स्टेट क्या कर देता है? स्टेट अपने ज्योग्राफिकल रीजन में जितना भी सरफेस वाटर है उस पे वो रेगुलेशन बना देता है, उस पे वो लॉ बना देता है, बिकॉज इट सेज दैट एंट्री 17 के अंदर दिस इज आवर सब्जेक्ट। और कई बार वो रिवर्स इंटरस्टेट रिवर्स भी हो जाते हैं। दैट लीड्स टू इट्स ओन प्रॉब्लम, इट्स ओन एम्बिग्यूटी। विल कम टू दैट। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 262 में बोलता है पार्लियामेंट may by law will decide कि how the interstate river water dispute will be resolved। दूसरा, पार्लियामेंट आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 262 में ही बोल रहा है कि when this mechanism for resolution of interstate river water dispute is being provided, judiciary may be excluded from any say there। पार्लियामेंट लॉ में ये भी प्रोवाइड कर सकता है। ये देखो आर्टिकल 262 ये नहीं बोल रहा कि जुडिशरी विल नॉट हैव एनी रोल। प्लीज नोट इट केयरफुली। What is Article 262 saying? Article 262 is saying कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसमें प्रोवाइड कर सकता है कि जुडिशरी विल नॉट हैव एनी रोल हियर। और देन शेड्यूल 7 में वी हैव सब्जेक्ट्स which go to union list, subjects which go to state list। Now under Article 262 पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड कि आप लॉ बनाइए। उसके अंदर उन्होंने दो लॉज बनाए हैं, द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। रिवर बोर्ड एक्ट क्या है? यू हैव सम डाउट? पूछिए। आते ना, आएंगे, विल कम टू दैट। तो हिज क्वेश्चन इज सर व्हाई कीप जुडिशरी आउट ऑफ इन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स? व्हाई कीप जुडिशरी आउट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आते हैं, पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस। We will come to a paragraph where we are discussing why judiciary has been kept out. But for now, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया आर्टिकल 262 में कि आप लॉ बना के डिसाइड करिए कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा। शेड्यूल 7 में भी पार्लियामेंट को बोला गया है कि जो इंटरस्टेट रिवर वैलीज है उसका रेगुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। तो अंडर दीज प्रोविजंस पार्लियामेंट हैज मेड दीज लॉज, रिवर बोर्ड एक्ट एंड इंटरस्टेट Water Dispute Act. What is River Board Act? It provides for establishment of river boards for regulation and development of interstate river and river valleys. Interstate river and river valleys की responsibility किसे दी गई है? रेगुलेशन की, डेवलपमेंट की सेंटर को दी गई है। तो सेंटर ने एक लॉ पास किया है कि भाई इंटरस्टेट रिवर वैली के लिए बोर्ड्स बन सकते हैं, रिवर बोर्ड्स बन सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज, मोर इंपॉर्टेंट लॉ इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। आर्टिकल 262 ने बोला है कि आप बनाओगे मैकेनिज्म बाय विच इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स वुड बी रिजॉल्व। तो वो मैकेनिज्म इज दिस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसमें क्या किया है पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एड हॉक ट्रिब्यूनल्स। एड हॉक ट्रिब्यूनल्स, लेट्स से एक डिस्प्यूट आया, एक रिवर है कावेरी, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट आया, उसके व्हाट सेंटर कैन डू? सेंटर कैन क्रिएट एड हॉक ट्रिब्यूनल। दिस ट्रिब्यूनल इज कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रिब्यूनल, इट इज फॉर स्पेसिफिकली दिस डिस्प्यूट। ये ट्रिब्यूनल अपना फाइनल जजमेंट देगा एंड देन दिस ट्रिब्यूनल विल बी डिसॉल्व्ड। इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रिब्यूनल दैट इज गेटिंग क्रिएटेड। तो 1956 एक्ट ने क्या प्रोविजन दिया है कि आप, तो आर्टिकल 262 ने बोला कि पार्लियामेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोविजंस ऑन हाउ द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट वुड बी रिजॉल्व। पार्लियामेंट ने क्या बनाया फिर?
1956 एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने 1956 एक्ट में बोला कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे, सेंटर बना देगा एक एड हॉक ट्रिब्यूनल। दिस ट्रिब्यूनल वुड हैव रिटायर्ड जजेस आल्सो, और वो लोग सारी बातें सुनेंगे, सारा डेटा देखेंगे, एंड देन दे विल गिव अ मैकेनिज्म of water distribution between the two states. So it will set up an ad hoc tribunal for the adjudication of dispute between two or more states in relation to waters of an interstate river and river valley. Plus, the decision of the tribunal is final and binding on parties to the dispute, neither Supreme Court nor any other court. देखो Article 262 में Parliament was also empowered to do what? It could exclude judiciary from having any say. Parliament वहां पे empower था, पर वहां पे आर्टिकल 262 डिड नॉट एक्सक्लूड जुडिशरी डायरेक्टली, उसने बोला पार्लियामेंट में एक्सक्लूड इट, एंड यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है। इज पार्लियामेंट ऑथराइज्ड टू डू इट? यस, अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू डू इट। तो नाइदर सुप्रीम कोर्ट, द 1956 act says that neither Supreme Court nor any other court is going to have jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal। तो कोई भी वाटर डिस्प्यूट जो कि ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है, वहां पे जुडिशरी विल नॉट हैव एनी से, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन इज, दो स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोई रिवर फ्लो हो रहा है, देयर इज डिस्प्यूट की I want this much water, I want this much water, this kind of dispute is there. Generally interstate issues कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। Any interstate issue will go to, उसका original and exclusive jurisdiction is with the Supreme Court. But here under Article 262 what has happened? Parliament ने दूसरा mechanism बना, Parliament को दूसरा mechanism बनाने के लिए empower किया गया है, and Parliament ने 1956 Act के थ्रू वो दूसरा mechanism बनाया है। These states may approach the central government and central government may create a tribunal. Let's say reverse नाम is R1, तो tribunal बना देंगे हम R1 वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ऐसे कई ट्रिब्यूनल्स आज तक बने, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 बना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, जो बने या तो अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो वाटर डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व, और दे आर कंटिन्यूइंग आल्सो। जैसे महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इज स्टिल फंक्शनिंग, इज स्टिल कंटिन्यूइंग। This is the mechanism by which issues are resolved. So this is the mechanism that exists right now. इसमें क्लैरिटी है सबको? अब सवाल किस पे आता है ना? सवाल इस मैकेनिज्म के इफेक्टिवनेस पे आता है। इस मैकेनिज्म में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रोसीजरल प्रॉब्लम। तो पहले हमें समझना था कि मैकेनिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, लीगल प्रोविजन क्या है, देन वी विल जंप ऑन टू इट्स इश्यूज, इट्स प्रॉब्लम्स which are there. So before we go to any of the other things, she had asked a question. What's your name? Ajinkya had asked a question. He said, why exclude Supreme Court or why exclude judiciary? Why has Parliament provided a provision jahan pe the law could exclude the role of judiciary? Because when the constitution maker, when in the Constituent Assembly it was being decided कि यार सारे interstate issues तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर रही है, बट क्या वाटर भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए? तो व्हेन दे लुक्ड एट अदर एग्जांपल्स, दे रियलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडरस्टूड दैट जुडिशियल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हैजंट वर्कड प्रॉपर्ली थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज हियर यू कैन नॉट ट्रीट रिवर एज प्राइवेट प्रॉपर्टी कि आधा इन्हें दे दो, आधा पानी इन्हें दे दो, आधा पानी इन्हें दो। Here the situation is much more complex and a number of other aspects have to be taken care of. And therefore, the experience of most countries has shown that rules of law based upon analogy of private proprietary interest in water do not afford a satisfactory basis for settling disputes. And if the matter had gone to Supreme Court, they would have followed some rule of law mechanism to settle these disputes, and various examples from throughout the world had shown that it was not very effective. Those disputes had continued. So some other mechanism had to be developed. And therefore, when our constitution makers were making these provisions, they went for a separate ad hoc
ट्रिब्यूनल रिलेटेड, और दे allowed parliament to develop a mechanism जहां पे we have developed the ad hoc tribunal related mechanism. Ajinkya, did I answer your question कि why the Supreme Court was excluded? Now आ रहे हैं ना, उस पे भी आ रहे हैं, अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे अजिंक्य ने बीच में रोक के पूछा कि सर क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया, टॉपिक पूरा खत्म होने दोगे ना, यू विल रियलाइज दैट ईच एंड एवरीथिंग। देखो मैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 2017 से पढ़ा रहा हूं, तो सोचो ना 7 साल में मैंने जो भी डायमेंशन हो सकते हैं कवर किए होंगे। अभी अभी तक क्या होता था कि आई यूज्ड टू रीड दो स्टैंडर्ड बुक्स की, डीडी बसु पढ़ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, बट नाउ आई हैव मूव्ड ऑन टू मोर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली मोटी मोटी किताबों की। तो देयर इज नथिंग which is needed for the exam which would not be there in your, उसकी चिंता मत करिए। हाँ नहीं, वहां पे ना देखो प्रॉब्लम यही है ना, उस पे आएंगे कि वहां पे उन्होंने बोला नहीं है एग्जैक्ट। तो देखो अब जो इंटरस्टेट रिवर है उसका भी वाटर वहां से फ्लो हो रहा है, तो उस पर भी कई बार रेगुलेशंस बना देते हैं, और इसीलिए एम्बिग्यूटी आती है बाद में। तो these subjects have not been specifically divided. वो अभी challenges में we will come to that. Okay, for now let's see, online तो कोई डाउट नहीं आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे सीधे हैं, आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं, उन्हें चाय पीने का मन होता है चाय पीने चले जाते हैं, डाउट पूछना होता है तो टाइप कर देते हैं, नहीं पूछना होता तो आप लोग सामने बैठे रहते हो, चलो होती रहती है, कुछ पूछ ही लेते है ना। जिनके रुका नहीं जा रहा था तुम, नहीं पूछो पूछो, but let the topic get completed. Most of the doubts would get resolved in the topic only. उसके बाद you ask all the questions you may have, because जो इन्होंने पूछा, जो आपने पूछा, वो सारी चीजें in sequence would have come in the notes and we would have studied it at the right place. So now let's come to, so we have this dispute, we have a dispute resolution mechanism, but still many interstate river water issues are pending, have remained controversial. जैसे अभी हमने पेन्नैयर रिवर डिस्प्यूट का देखा था बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, where the matter had gone to Supreme Court and Supreme Court के जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, बोला we are not listening to this case because we have some conflict of interest. I'm from Karnataka, the other judge is from Tamil Nadu. Or there is the Mahadai river dispute which is between Karnataka and Goa, which is still pending. Then कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट सेटल हो गया था एक तरह से, बट जब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गॉट सेपरेटेड, अर्लियर द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट वाज बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, बट देन इन 2014 तेलंगाना एज अ सेपरेट स्टेट वाज क्रिएटेड, तो उसके बाद दिस डिस्प्यूट वाज रीओपन्ड बिकॉज तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में वाटर कैसे डिवाइड होगा, एंड इफ एनी मैकेनिज्म नीड टू चेंज देन Maharashtra and Karnataka are also going to be affected. Then Kaveri water dispute mechanism है, Kaveri water dispute tribunal had given its judgment. That judgment was challenged in the Supreme Court. Supreme Court ने भी अपना final judgment दे दिया 2018 में, but still the states continue approaching Supreme Court regularly. अभी हमने देखा था जुलाई में, अगस्त में ही the Tamil Nadu government had approached Supreme Court because Karnataka is not releasing enough water for them. So despite having a well-defined mechanism, constitutional provision, law which has been created, and ad hoc tribunals which would be resolving those disputes, a number of these disputes continue to exist. So what are the sources of interstate river water dispute? Or the question should be, what are the causes of interstate river water disputes? क्यों है? In spite of the fact that it's been 75 years of independence, in spite of the fact that almost 70 years, 2026 में 70 years हो जाएंगे उस लॉ को भी, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट को, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, बट इवन देन व्हाई डू इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कंटिन्यू अकरिंग? एक मेजर फैक्टर है इसमें द फेडरल ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्यूटी। क्या एम्बिग्यूटी? अभी आपने से किसी ने पूछा था, आपने पूछा था शायद कि सर स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में इंटरस्टेट रिवर वैली का रेगुलेशन लिखा है, स्टेट लिस्ट में वाटर पे कंट्रोल लिखा हुआ है। नाउ वाटर
कैन दे हैव कंट्रोल ओवर इंटरस्टेट रिवर वाटर? उसमें एम्बिग्विटी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है. इफ यू सी हियर, यूनियन लिस्ट मेंशंस इंटरस्टेट वाटर एंड स्टेट लिस्ट सिंपली यूजेस द टर्म वाटर to signify what is essentially surface water confined within the boundaries of the state. This has allowed states to legislate on entire extent of surface water available within its borders, regardless of whether the source of river or its tributary is located outside the boundary or the river is draining into some other state or not. So what has led to this? The states develop their own mechanism of regulating the water system. Center यूनियन लिस्ट में इंटरस्टेट रिवर वाटर वाला इशू है. थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. स्टेट से देखो, ये जो वाटर मेरे स्टेट बाउंड्री के अंदर है उसको तो रेगुलेट मैं कर सकता हूँ. तो सी द लिस्ट, सी द स्टेट लिस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू मी. तो दिस एम्बिग्विटी, इसे हम फेडरल जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्विटी बोल रहे हैं. एक फेडरल फीचर होता है, सब्जेक्ट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. आप अगर एक फेडरेशन के की फीचर्स में देखोगे तो पावर वुड बी डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. दैट हैज बीन डन, बट वहां पे एम्बिग्विटी रह गई, विच लीड्स टू प्रॉब्लम्स, विच लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ कमी है. पहला प्रॉब्लम हम ये बता रहे हैं जिसकी वजह से इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आकर. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सेकेंड, इवॉल्विंग स्टेट बॉर्डर्स. नाउ व्हाई इवॉल्विंग स्टेट बॉर्डर्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स? ऐसे सोचो, अभी सतलज यमुना लिंक वाला इशू है. अर्लियर दैट वाज अ सिंगल स्टेट, तो पंजाब हरियाणा के बीच में वाटर डिस्प्यूट नहीं था. वो जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बन गया 1966 में, उन्होंने बोला अब हमें भी पानी का हिस्सा चाहिए. डिस्प्यूट स्टार्टेड देयर. पंजाब सेज दैट वी डू नॉट हैव मोर वाटर. और थिंक ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड. इट वाज बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. बट देन आंध्र प्रदेश गॉट बाइफर्केटेड इनटू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ना उन दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होने लगा. तो दिस इवॉल्विंग स्टेट बॉर्डर्स आर अनदर रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. पहला रीजन समझ में आया, एम्बिग्विटी इन फेडरल ज्यूरिसडिक्शन. दूसरा रीजन, इवॉल्विंग स्टेट बॉर्डर्स. नाउ सम स्टूडेंट्स टेल मी, सर रिवीजन के टाइम ना बहुत टाइम लगता है. अरे टाइम क्यों लग रहा है? यू ट्राई टू रीड एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ रिवीजन. नहीं भाई, just this keyword evolving state borders is enough. evolving state borders से आप समझो ना कि स्टेट बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं. आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा बहुत सारे स्टेट बॉर्डर्स जो रिसेंटली चेंज हुए हैं. तो व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू रीड एवरीथिंग. बट एग्जाम से 1 घंटे पहले तो बस आप कीवर्ड देखोगे ना. एग्जाम से 1 दिन पहले बस जो चीजें अंडरलाइन करी है वो देखोगे. वो अंडरलाइन यू कुड हैव डन योरसेल्फ, or you can rely on the underlining that I have done, or you can rely on this plus make some more underlining. जो चीजें बोल्ड कर रखी हैं वो आप हाईलाइट कर लीजिए, और एक हाइलाइटर लेके कि a day before exam or 1 hour before exam I'll only be able to look at the keywords. So revision would be much faster rather than reading each and every word. हमारी आदत है, हम ना एक वर्ड रीड करना चाहते हैं हर बार. अब एक वर्ड रीड करोगे 30-40 पेजेस के बुकलेट में, इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड दैट्स नॉट नीडेड. तो पहला रीजन व्हाई इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आर कंटिन्यूइंग टू अकर रेगुलरली, पहला था एम्बिग्विटी इन फेडरल ज्यूरिसडिक्शन. दूसरा है इवॉल्विंग इंटरस्टेट बॉर्डर्स. देन institutional ambiguity regarding which body's ultimate adjudicatory power in case of interstate water disputes. Now what is this institutional ambiguity? देखो, लॉ ने क्या बोल दिया? फाइनल डिसीजन वुड बी ऑफ द ट्रिब्यूनल. दिस इज व्हाट द लॉ सेड. लॉ के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल का है. बट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर हियर कर सकता है तो स्पेशल लीव पिटिशन. तो आर्टिकल 136 empowers सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल एंड एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स जजमेंट. तो यहां पे भी who has the final authority? The law says that decision of the tribunal would be final. फाइन, ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद डिस्प्यूट खत्म हो जाना चाहिए? नहीं. द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन गो टू सुप्रीम कोर्ट. फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहता है. जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, द ट्रिब्यूनल हैड गिवन इट्स जजमेंट, बट द स्टेट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, दे वर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट.
तो फाइनल ज्यूरिसडिक्शन किसका है उस पे भी एम्बिग्विटी. While the law wants the tribunal to have final jurisdiction, in constitution there are provisions which would allow the states to approach Supreme Court. Are we understanding this? Then there's another issue, hostile hydropolitics at sub-national level. What is this hydropolitics at sub-national level? देखो हाइड्रो तो वाटर है, वाटर इश्यूज को ना पॉलिटिसाइज कर दिया गया, शॉविनिस्टिक टेंडेंसीज को और स्ट्रेंथन कर दिया, उसको यूज करके लोग इलेक्शन लड़ना चाहते. If the issue was not politicized, then both the states could have made some compromises. जैसे if you go back to 2016 was a bad year in terms of rainfall. अब रेनफॉल के लिए बैड ईयर होने का मतलब है कावेरी रिवर नॉट हैविंग इनफ वाटर, तो तमिलनाडु नॉट गेटिंग इनफ वाटर, कर्नाटका नॉट गेटिंग इनफ वाटर, लोगों को वाटर इनफ नहीं मिल रहा है तो थोड़े परेशान हैं. उसमें कुछ पॉलिटिशियंस आएंगे, बोलेंगे देखो ये सरकार तमिलनाडु को ज्यादा पानी भेज रही है. कुछ दूसरे पॉलिटिशियंस आएंगे दूसरे साइड से, दिस गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गेट इनफ वाटर फ्रॉम कर्नाटक. दे विल पॉलिटिसाइज द इशू. और पॉलिटिसाइजेशन में क्या हुआ था 2016 में, तो बहुत वायलेंस हुआ. तमिल पीपल इन बैंगलोर वर फेसिंग इशूज, कन्नड़ पीपल इन तमिलनाडु वर फेसिंग इशूज. उनके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बसेस पे पत्थरबाजी चल रही थी. अब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव अ मैकेनिज्म अवेलेबल, बट व्हेन यू पॉलिटिसाइज द इशू, resolution becomes difficult. Why would resolution become difficult? Because even if tribunal has given some judgment, Supreme Court has given some judgment, there will always be opposition party जो government ready भी है मानने के लिए. There would always be opposition party which will say बेच आए ना स्टेट के पानी को, धोखा दे दिया ना तुमने स्टेट के लोगों को. They will try to do this. So when the issue gets politicized, finding a solution becomes very difficult. And this is something that has happened. अभी सतलज यमुना लिंक वाले इशू में भी यही हो रहा है. पंजाब हरियाणा में सेम पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ये इशू थोड़ा दबके रहता है, ऑपोजिशन वाले बस उठाते रहते हैं. बट दोनों स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट हो जाती है, दे ऑल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम. Okay, so this is another challenge which is leading to these disputes occurring and not getting resolved in an effective manner. Then, increasing water scarcity. Now, what is this issue of increasing water scarcity? See, our population is going up. अब 1950s और 60s में जाओ, जब हमारा population आज का 1/3 था, water requirement was also 1/3. But as population goes up, water requirement would increase. Every state would want more water in its share. So this increasing scarcity, not only because of increasing population, but also because of reducing water level. Groundwater down जा रहा है, चेन्नई में water scarcity है, बैंगलोर में water scarcity है. इस केस में क्या होगा? Everyone would try to get more share of the water, and when they try to get more share of the water, they would be taking that share from someone. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी तो नहीं बढ़ रहा ना. Are you understanding this? This is another reason why these disputes are occurring. So these are some of the factors which has led to increasing interstate river water disputes.